Good morning, class. We are studying the applications of biotechnology. You have asked certain problems, certain queries were there, and we have discussed all the queries in the last lecture. Today we are going to see the applications of biotechnology in transgenic animals. So we are going to see the transgenic animals. What is transgenic animals? As we have given the definition of the transgenic organisms, similarly here also we would see the animals whose DNA is altered, or we can say by the recombinant DNA the foreign gene is introduced, or the animal's DNA is manipulated according to our desire, so that we can incorporate whatever desired characteristic features we want in that animals. So that is known as the transgenic animals. In short, we can say that their DNA is altered or manipulated. Manipulated means changed according to our desires, because we are transferring the gene, whatever the desired characteristic features we want in the animal, so that gene from the other animals we are incorporating in the DNA of the transgenic animal. Right? So this is the transgenic animals. Then what are the different methods? Methods of obtaining transgenic animals. What are the different methods? First method is the DNA microinjections. What is DNA microinjections? Simply in DNA microinjection, the gene is taken from the same species or another species, and this DNA or the sequence of the nitrogenous bases or the gene is incorporated or introduced in the pronucleus of the fertilized ovum, fertilized egg. कि डीएनए लिया, जो भी हमें डिजायर्ड सीक्वेंस चाहिए डीएनए का, वो किसी हेल्दी एनिमल से हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद माइक्रो इंजेक्शंस की हेल्प से इस जीन को जो एनिमल रहता है उसमें डालने के लिए उसके फर्टिलाइज्ड एग के प्रोन्यूक्लियस में दिस जीन इज इनकॉर्पोरेटेड और इंट्रोड्यूस्ड. सो दिस इज नोन एज द डीएनए माइक्रो इंजेक्शन. Second is the embryonic stem cell mediated. Embryonic stem cell mediated transfer of the gene. What is this embryonic stem cell mediated? Again, the gene is taken, which is a sequence of nitrogenous base. Then in vitro, this gene means in vitro means in the laboratory, this sequence of DNA is introduced in the stem cells, because we are knowing that stem cells, they are the totipotent, they are having the potential to differentiate in any kind of the cells. तो जो डीएनए का सीक्वेंस है, डिजायर्ड जीन है, उसको लेबोरेटरी में स्टेम सेल्स में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं. देन दिस स्टेम सेल इज इंट्रोड्यूस टू द एम्ब्रियो ऑफ द एनिमल. जिस एनिमल को हमें ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना होता है, उसके एम्ब्रियो में ये वाली स्टेम सेल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. So since the stem cells would be having our desired gene, so they would grow, and when they will differentiate into the different cells, these cells would be having our desired gene. So that is known as the embryonic stem cell mediated. I hope now you are able to see embryonic stem cell mediated gene transfer. These are the different methods of gene transfer. Third is the retrovirus mediated. Next is the retrovirus mediated
mediated gene transfer. In retrovirus mediated gene transfer, the gene is transferred by the retrovirus, because we are knowing that retrovirus they have the reverse transcriptase enzyme, and the DNA can form, and the whole process is very easy. So this is the most common process of transferring the gene, that is a retrovirus mediated. मतलब सिंपली यहाँ पर किसी भी एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए रेट्रोवायरस का यूज करते हैं. So these are the different methods of introducing our gene of interest in the transgenic animals. Now we shall discuss that what is the significance or what is the uses of the transgenic animals. So significance or uses. Significance of transgenic animals or uses of transgenic animals. Number one is to study normal physiology. To study normal physiology. Suppose we want to introduce any any gene of interest to any other organism. Suppose example ले लिया, जैसे हमने इंसुलिन लिया था, तो इंसुलिन हमने ह्यूमुलिन we have created outside the human body in the laboratory, but before introducing it in the human body, the physiology is seen in the animals. सो एनिमल्स इज यूज्ड एज अ मॉडल्स. उसके पहले कि उसे हम ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करके देखें कि किस तरह से उसकी वर्किंग हो रही है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पे उसके जीन एक्सप्रेशन का क्या इफेक्ट है, बिफोर सीइंग और बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड जीन इन द ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ ऑल द रिसर्च वर्क डन ऑन द एनिमल्स, so that we can study that what kind of gene expression is having what kind of the effect on the physiology of the animals. Like growth, बहुत सारे animals में like जो transgenic fishes है, transgenic fish, we introduce the human growth hormone. Human growth hormone in the transgenic fish, because in this way the altered genetically transformed fish are having means the meat जो रहता है उसका क्वांटिटी इंक्रीजेस, ज़्यादा हैवी वेट में वो फिश ज़्यादा हैवी होगी, तो ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से तो उसकी फिजियोलॉजी पूरी ऑल्टर हो गई एंड द फिश बिकम्स फैट, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर मीट का जो प्रपोर्शन है वो बहुत बढ़ गया है. तो पहले उसको इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स आर स्टडीड. सो दैट इज व्हाई द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड. सेकेंड इज टू स्टडी द डिजीज, different kind of the disease. So transgenic animals increase our understanding to know that what the different kind of the genes they behave, what is their behavior or what is their expression during any kind of the disease. So for that also the animal models are prepared, like the cystic fibrosis, cancer, cystic fibrosis के लिए या कैंसर के लिए, वॉट एवर द म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कैंसर्स. तो टू स्टडी दैट हाउ दीज म्यूटेंट जीन work or express themselves in a diseased person and what is its effect on the whole body. So for the study or for our understanding, the study is done or the research work is done on the animal. So all kind of the diseases are studied so that the proper treatment can be prepared for any kind of the disease. तो इसके पहले first of all the disease is studied on the animals. So for that also the transgenic animals are used. Then next is to obtain the biological product. To obtain biological products
This example you can give like we have seen the hirudin. एक हमने hirudin का example देखा था. Hirudin act as a anticoagulant and the gene we have taken from the saliva of the leech. And then in vitro it is prepared, the hirudin is prepared in the laboratory, and afterward in the pathological lab this hirudin can be utilized as a anticoagulant. But sometimes such kind of the genes are introduced in the animals only, so that the animal can produce certain kind of the biological product and which can be utilized by the human being. You can understand this with some examples. First example is transgenic sheep. Transgenic sheep. This sheep is introduced with a gene that is alpha-1 antitrypsin. This gene, the gene for the production of the alpha-1 antitrypsin. So this gene is incorporated in the sheep. And when the gene is incorporated, sheep cell would produce the alpha-1 antitrypsin, and this alpha-1 antitrypsin would accumulate in the milk of sheep. And ये वाला जो मिल्क है वो यूज होगा फॉर द डिजीज एम्फीसेमा. एम्फीसेमा डिजीज रिलेटेड विद द लंग्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन यूटिलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज होने लगती है. तो उस डिजीज में ये शीप का जो मिल्क है वो बहुत यूजफुल रहता है, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसजेनिक शीप एंड दिस शीप इज इंट्रोड्यूस्ड विद द जीन alpha-1 antitrypsin. It's a protein. Alpha-1 antitrypsin is a protein, और प्रोटीन है तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए कोई जीन होगा. Then this alpha-1 antitrypsin is accumulated in the milk of sheep, and this milk is given as a medicine to the emphysema patients. तो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होने की भी कोई डर नहीं है, एंड द पर्सन कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली. So in this way this biological product can be obtained. Another very good example of the obtaining bioproduct, that is the transgenic cow. Transgenic cow. The first transgenic cow name is Rosie. And this transgenic cow is introduced with a gene that is alpha-lactalbumin. Alpha-lactalbumin. Because alpha-lactalbumin is a human protein. Alpha-lactalbumin is a human protein. And suppose when a mother gives birth to a child and because of अगर cesarean से बेबी हो रहा है या कुछ और दूसरे complications हैं, and if the mother doesn't lactate properly, at that time बच्चे को जो है वो काऊ का मिल्क दिया जाता है, because cow milk is easy to digest, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, and this is very easy to digest. तो उसके लिए अगर ये रोजी काऊ है, दैट इज स्पेशली ट्रांसजेनिक काऊ, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन है, दैट इज द अल्फा-लैक्टैल्ब्यूमिन. अल्फा-लैक्टैल्ब्यूमिन इज अ ह्यूमन प्रोटीन विच इज मैंडेटरीली प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. जब कोई ह्यूमन जो मदर रहती है वो उसके लैक्टेशन होता है, उसके मिल्क में अल्फा-लैक्टैल्ब्यूमिन रहता है. नॉर्मल काऊ में अल्फा-लैक्टैल्ब्यूमिन नहीं होता है, human protein नहीं होता. So that is why when such kind of the cow is transgenic cow is constructed, बनाया जाता है उसको बाहर से जीन देके. So this cow milk will be having the alpha-lactalbumin which is a human protein and it can be given to the newborn baby. तो उसकी वैसे ही ग्रोथ होगी जैसे वो नेचुरली अपने मदर का मिल्क लेगा. So these are the biological products. Next important significance is to study the vaccine. To study the effect of vaccine.
to study the effects of vaccine. Whenever any kind of vaccine is prepared, as we have studied when we studied the immune system, हमने देखा था डिफरेंट ग्रुप्स के वैक्सीन बनते हैं. पहले जो ग्रुप बना उसको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे ग्रुप्स में. तो कोई भी किसी भी ग्रुप का जब वैक्सीन बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टेस्टेड ऑन द एनिमल्स डायरेक्टली. अभी nowadays we are listening that for the COVID-19 coronavirus, the scientists they are trying to prepare the vaccine because vaccine is a permanent solution. Other treatment would come, the drugs and all, they are not the permanent solution. But if the vaccine is given, the antibodies would remain in the human body, and whenever we shall get the infection of the virus, then already the antibodies would be present in our body and they will fight and they will save ourselves from the infection. So this is the concept behind the vaccine. But vaccine may have lots of adverse effect on the human body. इसलिए कई सारे लेवल्स पे उसका टेस्टिंग होता है, बहुत सारे लेवल पे उसका टेस्टिंग किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द टेस्टिंग इज डन ऑन द एनिमल्स. वो भी पहले माइस के ऊपर होगा, उसके बाद वो रैबिट पे करते हैं, देन दे विल डू ऑन द मंकी, रीसस मंकी एंड ऑल. सो दैट ऑल दीज लेवल्स they would see if there would be any kind of the adverse effect. It can be seen in the animals only, and on that level only we can again correct the vaccine. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टेस्ट इज डन ऑन द वैक्सीन. तो कोरोना का भी जो वैक्सीन बन रहा है, सबसे पहले उसके टेस्ट एनिमल्स पे हो रहे हैं. जब वो एनिमल्स पर सेफ है तो उसके बाद ही उसका फर्दर जो टेस्टिंग होती है दैट इज डन ऑन द ह्यूमन. ऑल ऑफ द सडन द टेस्टिंग कैन बी नॉट डन ऑन द ह्यूमन. That is the reason that biotechnology involves the ethical ground. क्योंकि हमेशा बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं एनिमल्स के ऊपर भी हम लोग क्रुएल्टी नहीं कर सकते हैं, एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते हैं. बट ह्यूमन ऑलवेज टेक, मतलब अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझता है और वो सोचते हैं कि एनिमल्स के ऊपर ये सारे टेस्टिंग किए जा सकते हैं. तो वी शैल स्टडी द एथिकल ग्राउंड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. तो यही रीज़न है कि बायोटेक्नोलॉजी का एथिकल ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बट वॉट एवर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टडीड ऑन द एनिमल्स. कई बार एनिमल्स के लिए फ़ायदा भी कर दी ये सारी चीज़ें. Then to study the toxic chemicals. To study the chemicals. Similarly, as we have said about the vaccine, whatever the chemicals are there, similarly as we have said, अगर इंसुलिन बनाई है, इन विट्रो इंसुलिन बनी है, या किसी भी तरह का और भी कोई तरह के केमिकल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो whenever such kind of the chemicals are produced or by using the genetical engineering, first of all it is tested on the animals. When they prove safe on the animals, then only further the use or the utilization of such chemicals can be done on the human beings. So chemicals also. Then to improve the quality of the livestock. Next important significance, to improve quality of livestock. Livestock means like the cattle, all the cattle, pig, fish, chickens, they all are the livestock. Sheep. So we obtain different kind of the things from these livestock, which is the very useful things in our day-to-day life. Like sheep से हमें wool मिलती है. So what kind of gene we can give to the sheep so that they will produce the better quality of the wool. उसका the yield wise also, means quantity wise also, as well as the quality. So similarly the pig या goats हैं, तो transgenic goats are
introduce certain kind of the genes are introduced in the goat, so that the more meat can be obtained from the goat, and that also should be of very good quality. उसमें nutritive value ज़्यादा हो. Fish, as I told you already, transgenic fish, उसमें growth hormone, human growth hormone is introduced in the transgenic fish. Cattle also, cow है या फिर buffalo है, तो उसके अंदर भी desired characteristic feature का gene introduce कर देते हैं, so that the more milk can be obtained, and that also with the very good or high nutrient value. तो जो ट्रांसजेनिक है लाइव स्टॉक है, तो उसमें आप लोग लिख सकते हो ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक बफेलो, ट्रांसजेनिक गोट, ट्रांसजेनिक चिकन या ऑल काइंड ऑफ द एनिमल्स. तो उसमें एग के लिए कि एग ज़्यादा हो क्वांटिटी वाइज भी, और उसमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा हो. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू कैन राइट डाउन इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. With this, we have concluded the applications of the biotechnology in the animals, or applications of biotechnology. Then only the certain biopiracy and all few small topics are left, which we shall discuss in the next video. Thank you.